magnificent horses of the elite president's stable are bred by the Remount Veterinary Corps and presently being looked after by 44 Military Veterinary Hospital under the able command of Colonel Neeraj Gupta. This hospital is also as old as the President Bodyguard and is equipped with a state-of-art diagnostic and therapeutic facilities, digital photography, ultrasonography, laser therapy, and 2 well-equipped operation theatres are existing in the hospital in addition to numerous other facilities. The live presence of the horses of the President Bodyguard is perhaps the reason that this noble animal is not depicted in stone, as has been done for other animals and birds. On the gates and facade that adorn the presidential building, the unique architecture of this stately building resonates the era of horse-drawn coaches and mounted escorts, the red gravel forecourt, the cobbled north and south courts, and the parquet flooring of the eastern and western subways provide a firm footing for the horses. The delicately fretted red sandstone arches on either side of the main gate are designed to accommodate mounted guardsmen. Within the building, chandeliers, arches, doors, and accoutrements all take into account the tall lance-carrying PBG troopers. The Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, Srimati Droupadi Murmu.
राष्ट्रपति अंगरक्षक, 2 अधिकारी, 5 सरदार, 33 अंगरक्षक परेड पर। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। से मैं ध्यान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब परेड का निरीक्षण करेंगे। The President's ceremonial vehicle is being driven by Dafadar Gurpreet Singh. Ladies and gentlemen, the President of India, Srimati Droupadi Murmu, will now be inspecting the parade. The presentation today by Srimati Droupadi Murmu, the President of India, will be the 14th Silver Trumpet and Trumpet Banner that the regiment will receive since independence. The President, Srimati Droupadi Murmu, is inspecting the number 1 division, astride bay horses, which is led by Risaldar Major Ajay Kumar, astride Ranvijay. Now passing the regiment standard. The President is now inspecting the number 2 division, astride dark bay horses, led by Risaldar Harpal Singh, astride Viking. Ladies and gentlemen, what beautiful coincidences that while the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, President Bodyguard also enters its 250th year of raising. What a milestone! देवियों और सज्जनों, ट्रम्पेट और बैनर पेशकश की परंपरा 1923 से चली आ रही है। आइए अगली ऑडियो विजुअल से समझते हैं प्रेसिडेंट सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर का महत्व। In keeping with past tradition, the President of India, Srimati Droupadi Murmu, will honor the Bodyguard by presenting them her Silver Trumpet and Trumpet Banner. This distinguished distinction was conferred upon the Bodyguard for the first time in 1923 by Lord Reading, when the Bodyguard had completed 150 years of service.
This practice has been maintained to this day by the President of India. The monogram of the President appearing on the presentation banner along with the 4 emblems, each of which signifies their specific value. The Ashoka, which has been taken from Sarnath, signifies authority. The elephant from the caves of Ajanta indicate equity. The universal symbol of the scale of justice represents equality and fraternity. And the vase with lotus and buds depicts peace. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, presented his silver trumpet and trumpet banner to the Bodyguard on 14th May 1957. Dr. S. Radhakrishnan was to make a similar presentation at a ceremonial parade on 21st October 1962. But the parade had to be cancelled due to the Sino-Indian border war. The untimely demise of Dr. Zakir Hussain, the then President of India, prevented this presentation taking place in 1969. On 30th September 1973, Sri V.V. Giri presented his silver trumpet and banner to commemorate the bicentenary of the regiment. Subsequently, Sri Fakhruddin Ali Ahmad presented his banner on 21st March 1975. Sri N. Sanjeeva Reddy on 11th December 1978. Gyani Zail Singh on 6th October 1983. Sri R. Venkataraman on 24th October 1988. Dr. Shankar Dayal Sharma on 18th October 1993. On the occasion of the regiment's 225th anniversary, Sri K.R. Narayanan presented his trumpet and banner on 18th November 1998. Dr. A.P.J. Abdul Kalam on 2nd December 2005. Srimati Pratibha Devi Singh Patil on 1st March 2008. Sri Pranab Mukherjee presented his silver trumpet and banner on 30th March 2013. Following which, on 17th November 2017, Sri Ram Nath Kovind presented the last trumpet and banner to the regiment. This evening, fittingly enough, on the grand occasion of the regiment celebrating its 250th Racing Day, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces and the President of India, Srimati Droupadi Murmu, will honor the Bodyguard on this special occasion. The regiment is now forming a hollow square formation for the next element of this ceremony, the presentation of the President's silver trumpet and trumpet banner. The Commandant, along with his trumpeter, shall now move forward to receive the President's silver trumpet and trumpet banner. Trumpeter, आगे बढ़. राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट एवं ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने का आपसे निवेदन है. The President of India, Srimati Droupadi Murmu,
has presented the President's Silver Trumpet and Trumpet Banner to the President's Bodyguard. The Commandant's trumpeter, Dafadar Manjeet Kumar Dagar, proudly displaying the President's Silver Trumpet and Trumpet Banner. Now, I would like to request Major General M.K. Khan, additional ADGPS, to hand over the VIP album to the Honorable President for releasing the special cover to commemorate 250th year of raising of the President's Bodyguard. सिंगल फाइल बनाएंगे बाजू सेक्शन गनबाई घूम कदम कदम The regiment is now reforming into a single file, and thereafter the senior-most regiment of the Armored Corps, the senior-most regiment of the Indian Armed Forces shall march past the grandstand at a walk, trot and canter. Number 1 division आगे Droupadi Murmu section Ganagom kadam kadam. All persons are requested to rise each time the regimental standards are carried past the grandstand. Personnel in uniform are to salute. राष्ट्रपति अंगरक्षक अब मंच के सामने से गुजरेंगे. पहले कदम कदम, फिर दुड़की और आखिर में सरपट की चाल पर. देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि जब भी निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. जो लोग वर्दी में हैं वो सलामी देंगे. The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Anup Tiwari astride Brutus, leading the parade, followed by his trumpeter Dafadar Manjeet Kumar Dagar. The regimental standard is being carried by Risaldar Rajesh Kumar Punya astride Ace, and the color escorts are Risaldar Satnam Singh astride Aryan and Risaldar Bhavani Singh astride Avro. The parade comprises 2 divisions. Number 1 division astride Bay Horses is led by Risaldar Major Ajay Kumar astride Run Vijay. Number 2 division astride Dark Bay Horses is led by Risaldar Harpal Singh Chauhan astride Voyager. And finally, the second in command of the regiment, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav astride Victory. Ladies and gentlemen, the senior-most unit of the Indian Army, the President's Bodyguard, has entered its 250th year of the raising this year. Presently, the President Bodyguard is amongst
the few mounted regiments in the world which has held on to its glorious tradition of being the household cavalry of the Indian head of the state. The ceremonial role is related to upholding the stateliness and grandeur of Rashtrapati Bhavan as the seat of the President. As the military band changes tune to Keel Row, the regiment now transitions into the trot. Look at the regimental standard. Ladies and gentlemen, what is so special that we stand and salute the regimental standard? A moth-eaten rag on a worm-eaten pole. It does not seem likely to stir a man's soul. 'Tis the deeds that were done beneath the rag, when the pole was a staff and the rag was a flag. ऐसी क्या खास बात है दोस्तों रेजिमेंट के निशान में, जो हम निशान टोली के सामने खड़े होकर सलामी देते हैं। सेना के बहादुर जवानों के परम बलिदान, उनके खून की आहुति से रंगा होता है रेजिमेंट का निशान। पीढ़ी दर पीढ़ी बहादुर सैनिक अपने देश के लिए नाम, नमक और निशान के लिए अपनी जान कुर्बान करते आए हैं। इसीलिए दोस्तों, जब निशान टोली हमारे सामने से गुजरती है, हम अपने वीरों के परम बलिदान, उनके निशान को सलामी देते हैं। The regiment today is an amalgam of hardy sons of the soil and is a stirring example of national integration. Recruitment into the bodyguard is much coveted. The physical standards are exacting, with 6 feet being the minimum height for a trooper. Men of the bodyguard are expert horsemen, adept at ceremonial punctilio, trained combat paratroopers, armored vehicle crewmen and tradesmen. Honed to perfection in diverse combat skills, the President bodyguard personnel have proven their worth in battle as well as in mounted tourneys and equestrian skills. और देखिए जिस तरीके से मिलिट्री बैंड ने अब अपनी धुन बदली, स्पेनिश जिप्सी डांस, उसी के साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट ने अपनी चाल बदली, सरपट की चाल से अब मंच से गुजरेंगे। क्या नजारा है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में आज इतिहास रचा जा रहा है। भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट की 250 सालवीं वर्षगांठ और आजाद भारत का 75वां साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है हमारा देश। The President bodyguard is an integral part of all state functions, be the Republic Day parade, beating the retreat, the state opening of the Parliament, visits by heads of states, ceremonial changing of the guard, investitures, presentation of letters of credence, swearing in of government ministers, state banquets or receptions hosted by the President of India. Ladies and gentlemen, the parade would now reform at the inspection line and then advance in review order. And now, for the first time this evening, the President's bodyguard shall proudly sound the President's silver trumpet to accord a national salute to the President of India. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश।
Honorable President may like to address the parade. Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, distinguished guests, gallant officers, JCOs, and soldiers of my bodyguard, ladies and gentlemen, dear students. It is a matter of delight to present to you a silver trumpet and my trumpet banner today. I congratulate the commandant, officers, JCOs, and other ranks of the PBG for the remarkable display of parade, maintenance of well-groomed horses, and the impressive ceremonial attire. I extend my special greetings to ex-commanders, officers, JCOs, and other ranks of who have served with PBG in the first and are present here to witness this ceremony. I welcome all dignitaries, ambassadors, and school children who have come to witness this grand ceremony. Today's event is even more special as the President's Bodyguard is celebrating 250 years of its regime. It is coinciding with Azadi Ka Amrit Mahotsav being celebrated across the country. I congratulate the PBG for their excellent military traditions, professionalism, and discipline in all their tasks. The nation is proud of you and is in appreciation of your service. I would like to emphasize that this honor bestowed upon you carries with it an added responsibility, more so since you are all my personal troops. I am confident that you will strive with dedication, discipline, and valor to maintain the highest traditions of Rashtrapati Bhavan and be an ideal role model for other regiments of the Indian Army. I wish you success in all endeavors. My special greetings to you and your families on this occasion. Jai Hind. राष्ट्रपति जी की जय पुकारेंगे। राष्ट्रपति जी की जय, राष्ट्रपति जी की जय, राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति अंगरक्षक रक्षक कनगोम कदम कदम। कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर राष्ट्रपति अंगरक्षक परेड ग्राउंड से कूच करते हुए देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट का अभिवादन करें। कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट ने। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा कि जोशीली धुन। Ladies and gentlemen,
Now get ready to witness something you have never witnessed. It starts from dressage. Dressage is a form of horse riding performed in exhibitions and competitions. As an equestrian sport, dressage is described as the highest expression of horse training, where horse and rider are expected to perform from memory a series of predetermined movements. The rider is relaxed and appears effort-free, while the horse willingly performs the requested movement. The guiding of a horse through a series of complex maneuvers by slight movements of the rider's hands, legs, and weight is what you will witness now. देवियों और सज्जनों, अब राष्ट्रपति अंगरक्षक के शानदार सवार आपके सामने एक इक्वेस्ट्रियन डिस्प्ले पेश करेंगे। सबसे पहले ड्रेसाज का प्रदर्शन किया जाएगा। ड्रेसाज टीम के सरदार हैं नायब रिसालदार पवन कुमार और उनके घोड़े का नाम है गब्बर।
कंपटीशन था उसमें गोल्ड मेडल जीता, एफईआई वर्ल्ड चैलेंज ड्रेसाज में गोल्ड मेडल, प्री सेंट जॉर्ज क्लास में भी गोल्ड मेडल, और आज की तारीख में भारतीय सेना के सबसे उत्कृष्ट ड्रेसाज राइडर माने जाते हैं दफेदार यादराम, प्रेजेंटली द बेस्ट आर्मी राइडर इन ड्रेसाज। कितनी बेहतरीन तालमेल है दोस्तों, डायगोनल क्रॉस कर रहे हैं। रेजिमेंट के वही अश्व योद्धा जो कुछ समय पहले प्रांगण में परेड पे थे, आपके सामने ड्रेसाज करते हुए। घोड़ों को बेजुबान जीव कहा जाता है, लेकिन ये गलत फहमी है, हमें इनकी खामोशी समझनी पड़ती है। धड़कन से धड़कन और ताल से चाल मिलाकर चलना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में, हमारे पुराणों में घोड़ों को सूर्य पुत्र माना जाता है, दिव्य शक्ति का सर्वोच्चम प्रतीक। Ladies and gentlemen, we request a huge round of applause for the best riders of the Indian Army who put up a brilliant show of dressage for you. Now, we have the Tri-Services Military Band with its musical genius of the finest massed military band music of India. A Tri-Services Band refers to a joint Indian Armed Forces military band that performs together as a unit. Today, the Army Band is led by Subedar John Zakaria. The Air Force Band is led by Master Warrant Officer Raghuveer, and the Naval Band is led by Master Chief Petty Officer Musician Class 2 Devraj. And the Band Master overall is Subedar Major Sobhan Singh. Please welcome them with a huge round of applause. विजय भारत की धुन पर मिलिट्री बैंड प्रांगण में प्रवेश करता हुआ देवियों और सज्जनों, आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। भारतीय संस्कृति में सैन्य संगीत की प्रथा हजारों साल पुरानी है। आज से 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध हो रहा था, वहां भी युद्ध शंख बजते थे। This is a slow march tune called Twilight. Ladies and gentlemen, it takes years of precision, perseverance and practice to play in such perfection and harmony. You're not just witnessing skilled musicians, they are also trained soldiers.
The military band is now performing a very famous composition by one of the favorite sons of Mother India, the prize-winning composer A.R. Rahman's tune, Jai Ho. Now you can see the bandmasters Subedar John Zakaria, Master Warrant Officer Raghuveer, and Master Chief Petty Officer Musician Class 2 Devraj join all the other musicians. सारे जहां से अच्छा, ये अमर धुन आज से 118 साल पहले मोहम्मद इकबाल ने रची थी। तरानाए हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। देवियों और सज्जनों, मिलिट्री बैंड के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। In a short while from now, the buglers, positioned high atop the Rashtrapati Bhavan, would sound the retreat, and the national flag atop the dome of Rashtrapati Bhavan would be lowered for the day. Ladies and gentlemen, you are requested to rise when retreat is sounded by the buglers.
देवियों और सज्जनों, रिट्रीट की प्रथा भारतीय इतिहास में एक बहुत ही प्राचीन सैन्य प्रथा है। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी नगाड़े बजते थे, ढोल बजते थे, युद्ध शंख बजते थे और सूर्यास्त के साथ युद्ध विराम बजता था। उसी प्रथा को आज आपने अपनी आंखों के सामने देखा है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय अंगरक्षक यह भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ इकाई है, जिसकी विशिष्टता सभी आधिकारिक और औपचारिक अवसरों पर रेखा के दाईं ओर के रूप में अपनी स्थिति में है। आइए अगली ऑडियो विजुअल से समझते हैं इस रेजिमेंट की भूमिका, संचालन और प्रशिक्षण। The President's Bodyguard has a rich and illustrious history of 250 years of honorable and dedicated service, rightly known to be the senior most regiment of the Indian Army, whose distinction in the serried ranks of the Indian Army is its position at the right of the line on all occasions. Each one of its soldiers is a specialist in many fields, who knows that he cannot be trespassed upon. Wherever they stand, they get but only command, respect and admiration. What makes these soldiers so elite? The secret lies in the spirit of high honor and human endeavor that the bodyguard has always lived up, so aptly described by one of their commandants in these stirring words. At a period when men possessed of the highest military rank have not scrupled to violate the most sacred oaths of allegiance and fealty, there is still a happy corner of the globe where, by a simple assertion, equally binding to our country, is taught a sufficient pledge which can never be broken. And on that pledge, therefore, the simple word of a gentleman, do I, in my own name, and on behalf of my soldiers and officers, engage to defend this banner. That puts, so aptly embodies in its words, a soldier's trump, his honor, his life, and above all his destiny. Such were the sentiments, such will remain the sentiments and pledges of this elite group to the nation, their supreme commander and their profession. This is enshrined in their stirring motto, Bharat Mata Ki Jai. These mercurial, hardy and regal sons of India, after systematic and rigorous training, are casted into soldiers who are dauntless in combat, steadfast fighters, earthy and tenacious, and at the same time specialized in mounted and dismounted roles for the presidential ceremonies. Their name is synonymous with gallantry and chivalry. Ever willing to test their mettle, these valiant guardsmen revel in the spirit of adventure, from tackling spirited steeds to taming raging torrents and conquering the skies. These men have done it all, and with panache. This then is the result of assiduous training, courage, impeccable deportment, precision and grit. From their traditional ceremonial horses to mechanical mounts, the bodyguard are equally at home with both. The armored corps salutes its brethren, who are the senior most of their group. Cavalry of the skies, they jump with the pick of the army, the crack parachute regiment. No military insignia is more coveted than the wings of the parachutist. It sets soldiers apart as the special breed of fighting men. This ultimate test of training is combat performance, schooled to perfection. Personnel of the bodyguard have volunteered every time the nation has been called to arms. In 1962,
The Bodyguard armored cars were the first to be airlifted to Chushul. In 1965, the regiment participated in the Operation Ablaze. In the 1980s, detachments of the Bodyguard operated in Sri Lanka. And a detachment of the regiment is always deployed on the world's highest battlefield in Siachen, defending the nation's northern borders, along with their comrades in arms of the infantry. A detail of the Bodyguard has also been committed overseas, with the Indian contingent forming part of the United Nations forces. Finally, ceremonial, rock-like, regal dignity, resplendent to the eye, and immaculate imprecision. This role is the most difficult, yet is the one that casts the bewitching spell on all who witness it. For it is a feast of color, pageantry, military precision, and elegance. Military customs, traditions, and splendor come alive to touch the spirit with the magic of sound and substance. The regiment having been intricately involved in the ceremonial events, this has not wavered the man to shine in equestrian sporting events. In spite of the fact that the regiment was not raised for sporting purposes, the riders of the regiment have excelled in the field of equestrian sports, with many riders having etched their names in the history for their achievements at various sporting levels, national and international. We now move on to a display of some breathtaking show jumping. If you look towards your friend, there are many obstacles that have been placed in front of you. All of these are fixed, solid obstacles. A real cot, a table with two very, very sincere students, two white gypsies of the President's Bodyguard, a couple of motorcycles, and towards the left side, we also have one of our junior war horses called Chetak. Ladies and gentlemen, this is a very tricky, high-risk demonstration of show jumping. The slightest hesitation on part of the rider or the horse could lead to a disaster and serious injuries. You are requested to please keep your mobile phones on silent mode. Do not use your flash. The show jumping team is led by Risaldar Major Lakhvinder Singh astride rocket. मैदान में उतरने वाले हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक के अनुभवी जांबाज सवार रिसालदार मेजर लखविंदर सिंह। इनके घोड़े का नाम है रॉकेट। जैसा काम वैसा नाम। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन यहां शुरू किया आपके सामने, और ये पीबीजी की दो मोटरसाइकिल्स के ऊपर से छलांग मारते हुए दोनों डीआरस मूर्ति बन के बैठे हुए हैं। रिसालदार मेजर लखविंदर सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया। रॉकेट अब जिस चीज के ऊपर से, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, और अब बढ़ते हुए आ रहे हैं बग्गी की तरफ, और बहुत ही ऊंची छलांग लगाई। वहां पे उनका छोटा भाई चेतक खड़ा है, 8 साल का घोड़ा। लांस दफेदार अविनाश पूनिया की भी दिल की धड़कन रुक गई थी। लखविंदर साहब घूम के आ गए। ये चारपाई, अरे वहां पे कोई सो रहा है, चलो उसको नहीं डिस्टर्ब करते। लेकिन ये दो बंदे, ये तो बड़े सिंसियरली अखबार पढ़ रहे हैं। ये कौन है? रिसालदार मेजर लखविंदर सिंह और रॉकेट अब अग्नि परीक्षा की ओर। देखिए किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ पार किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मैदान में उतरे हैं अब दूसरे सवार। इनका नाम है सवार लवजीत सिंह। घोड़े का नाम है विक्रमादित्य। पहले ऑब्स्टिकल को पार किया, और दोनों डीआर बिल्कुल सावधान पोजीशन में बैठे हैं। एक्टिंग लांस दफेदार जसपाल सिंह और सवार संजीव कुमार, इन्होंने अपनी सांसें तक रोकी हुई हैं दोस्तों, और ये जिप्सी के ऊपर से छलांग लगाई। लांस दफेदार वीर सिंह और दफेदार सुरेंद्र सिंह जो जिप्सी ड्राइवर्स हैं, उनके मन में केवल एक ख्याल है, कहीं हमारी गाड़ी में कोई डेंट न लग जाए। और ये देखिए घूमते हुए आ रहे हैं सवार लवजीत सिंह और विक्रमादित्य अब चारपाई की तरफ, और उसको भी छलांग मार के पार किया। चारपाई में
चारपाई में एक असली इंसान सो रहा है, उसका परिचय मैं दूंगा आपको, लेकिन अभी सवार लवजीत सिंह और विक्रमादित्य राज संभाली, घोड़े को संभाला और अग्नि परीक्षा के थ्रू दोस्तों आसमान में अंधेरा छा रहा है, लेकिन मैदान पे आग लगी हुई है। लेकिन घोड़ों में किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं। दफेदार मनदीप सिंह गंगा पर सवार अब मैदान में उतर चुके हैं। ऊंचे कद के सुदर्शन सवार हैं ये राष्ट्रपति अंगरक्षक के दफेदार मनदीप सिंह। इनकी घोड़ी भी ऊंचे कद की घोड़ी है, उसका नाम है गंगा। किस तरीके से बड़ी सधी हुई संतुलित चाल में आगे बढ़ रहे हैं। एंड दफेदार मनदीप सिंह astride Ganga clears the two gypsies. Oh, look at that, giving jitters to little Chetak there. Chetak is one of the younger horses, a special horse, 8-year-old from the President's Bodyguard. And now we have Dafedar Mandeep Singh astride Ganga, clearing the man on the court and over the tables. ये सवार महिपाल सिंह जो हैं, ये मैं रोज देखता हूँ, ये सोते ही रहते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी नींद बहुत पक्की है भाई। और अब घूम के आ गए दफेदार मनदीप सिंह एंड गंगा towards the fire jumps. Watchful, careful, but goes through with full confidence. Ladies and gentlemen, everything that you see in front of you is 100% real. We now have Dafedar Rana Pratap astride Galib, who has now entered the arena and cleared the first obstacle. He's moving towards the two motorcycles. Dafedar Rana Pratap astride Galib. Look at the way he's coming straight down the center and clears the two gypsies with full confidence. Oh, a close takeoff. And little Chetak said, come on, man, you can do better. Don't give me such a hard skip. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to little Chetak, who's standing there being a brave little war horse. Dafedar Rana Pratap astride Galib over the PBG jump and now turns around for the final stretch, approaching the fire jumps. This is how war horses were trained in the years gone by, and this is how war horses of the Indian Army are trained even today. We now have Naib Risaldar Pavan Kumar astride Absolute in the arena, an accomplished rider. Naib Risaldar Pavan Kumar turns around for the prep and over the gypsies. No hesitation whatsoever. And a perfect clearance over the buggy, and little Chetak turns around now for the court. The man on the court is Savar Mahipal Singh, deep in slumber. Nothing disturbs him. And the two soldiers on the table, Savar Manoj and Savar Jugraj. सवार मनोज और जुगराज ये जो हैं कई दिनों से वही अखबार पढ़ रहे हैं। और अब दफेदार और नायब रिसालदार पवन कुमार एब्सोल्यूट के साथ अग्नि परीक्षा को पार करते हुए, और इसी के साथ शो जंपिंग का ये प्रदर्शन अब समाप्त हुआ। लेकिन जाने से पहले आपको एक बड़ी अनोखी शो जंपिंग की फीट दिखाएंगे। वो देखिए आपके दाहिनी तरफ, towards your extreme right, you have the dispatch riders from the Corps of Military Police, and they are going to be holding a wooden log in between motorcycles that are on the move. दाहिनी तरफ मिलिट्री पुलिस के डिस्पैच राइडर्स मोटरसाइकिल्स पर चलते चलते बल्लियों को आपके सामने लाएंगे, और चलती हुई मोटरसाइकिल्स के बीचों बीच से गुजरेंगे हमारे राष्ट्रपति अंगरक्षक के शो जंपिंग टीम। आपके बाईं तरफ, towards your left, we have the first pair ready, Risaldar Major Lakhwinder Singh and Naib Risaldar Pavan Kumar. The two senior JCOs of the show jumping team will be the first pair to take on the moving bars. You can see the riders of the Corps of Military Police approaching the center, and Risaldar Major Lakhwinder Singh and Naib Risaldar Pavan Kumar going towards the bars.
And the second pair, Dafedar Mandeep and Dafedar Rana Pratap. देखिए कितने जोश के साथ छलांगे लगाएं. एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. देखने में बहुत आसान लगता है. और देखिए किस तरीके से मनदीप का घोड़ा जोश से भर गया है. गंगा और गालिब दोनों पीछे पीछे अपने सरदारों के पीछे. अब उन्होंने संतुलित चाल पकड़ी और मैदान से कूच करते हुए बाहर निकले. तो ये था शो जंपिंग का प्रदर्शन. दिल की धड़कन थोड़ी बड़ी थोड़ी सी बड़ी, लेकिन अब जो है आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी नहीं, दौड़ने लगेगी. क्योंकि अब आपके सामने भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट एक जोखिम भरा, जान से खेलने वाला प्रदर्शन करने वाली है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नाउ प्रेजेंट अ breathtaking trick riding demonstration by the top riders of the President's Bodyguard. The ground team is in front of you, led by Acting Lance Dafedar Sumit Kumar. आपके सामने राष्ट्रपति अंगरक्षक के जांबाज सवार ट्रिक राइडिंग का एक जोशीला प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं. ट्रिक राइडिंग टीम के सरदार हैं नायब रिसालदार सुंदर सिंह तनवर. उनके घोड़े का नाम है रॉकी. और आगे हवा से बातें करते हुए नायब रिसालदार सुंदर सिंह तनवर, उनके पीछे सवार हरदेव सिंह, दफेदार जितेंद्र, सवार रिशाल सिंह तनवर. स्टैंडिंग सैल्यूट on a galloping horse. It looks very easy, ladies and gentlemen, but let me explain this move to you. There is a 500 kg horse moving at 40 feet per second, and you are standing in the stirrups and saluting the President of India. It cannot be a bigger moment for a soldier of the President's Bodyguard. एक बार जोरदार तालियां बजाएं ट्रिक राइडिंग टीम के लिए. अब आपके सामने लांस और लांस पैग का नमूना पेश करेंगे दफेदार जितेंद्र. इनके घोड़े का नाम है तमन्ना. दफेदार जितेंद्र जो पहले आपके सामने विंसेंट पे आए स्टैंडिंग सैल्यूट करते हुए, चंद पलों में उन्होंने अब तमन्ना को साधा और तैयार हो रहे हैं. तमन्ना उर्दू का शब्द है. The Urdu word tamanna means desire, and this, the fastest mare of the President's Bodyguard, has a desire for speed. And here he comes, Dafedar Jitendra picks up the first peg and he's going in for the lance now. He picks up the lance, he's going for the second peg now, and he's got it. Dafedar Jitendra और तमन्ना की तमन्ना पूरी हुई. लेकिन दोस्तों, इस घोड़ी में इतनी रफ्तार है कि हमारे जैसा कोई साधारण इंसान इस पे अगर बैठ गया तो कनॉट प्लेस से पहले तो ये रुकने नहीं वाली है. अब आपके सामने इसी प्रदर्शन का एक और अध्याय लिखेंगे सवार रिशाल सिंह तनवर, जो कि रेजिमेंट के एक युवा सवार हैं. और ये देखिए पूरे जोश के साथ उतरे हैं टाइटन पर सवार. इन्होंने उठाया पहला, जा रहे हैं दूसरे के लिए, उठा लिया लांस, और इसी के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस. जैसा कि मैंने कुछ पलों पहले आपको बताया कि देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन 500 किलो का घोड़ा जब 40 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है ना दोस्तों, तो दिन में भी तारे दिखने लगते हैं. घोड़ा दौड़ाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संतुलन में रखना और सही जगह पर रोकना, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है. Now we'll have a demonstration of triple tent pegging, the most challenging task for any rider. Risaldar Major Lakhvinder Singh, astride his steed Hunter, is now on the field. He's got a lance in his hand, twirling it with full confidence. A sword comes out from his mouth and a bayonet from his waist. And there he has it, 3 out of 3. There was a standard issue army lance in his right hand, 9 feet 9 inches in length, a sword held in his mouth, and a bayonet tucked in his belt towards the left side. Getting 3 pegs out of 3, that was Risaldar Major Lakhvinder Singh astride Hunter.
The track is now going to be ready for the next rider. दफेदार जितेंद्र और तमन्ना की जोड़ी एक बार फिर आपके सामने आ रही है. देखिए, हवा से बातें करते हुए तमन्ना आ गई आपके सामने. उठाया पहला पैग, शाबाशी देकर तलवार के साथ दूसरा, और बेनट के साथ तीसरे की तरफ उसको चीर दिया. एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों. ये जो प्रदर्शन आपके सामने किया जा रहा है, ये दुनिया में सबसे खतरनाक प्रदर्शन माना जाता है दोस्तों. आमतौर पर 300 350 गज की दूरी चाहिए होती है, लेकिन यहां पर इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए हर राइडर के लिए चुनौती काफी बड़ी और कठिन. अब आपके सामने हैंकी पिकिंग का प्रदर्शन किया जाएगा. मैदान में सबसे पहले उतरेंगे ट्रिक राइडिंग टीम के सरदार नायब रिसालदार सुंदर सिंह तनवर. अपने घोड़े रॉकी पर देखे किस तरीके से झुकते हुए उठाया पहला, और ये दूसरा, और ये तीसरा. दोस्तों, कई दर्शक पूछते हैं कि क्या हम भी ऐसे करतब कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरा जवाब यह होगा कि जी हां, अगर आप चाहें तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका पुनर्जन्म हो जाएगा. क्योंकि इस रफ्तार पे जब घोड़ा दौड़ता है तो झुकना बहुत आसान है, लेकिन काठी में वापस आना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. और अब आपके सामने हैंकी पिकिंग का दूसरा प्रदर्शन. Another demonstration of hanky picking now being performed by Savar Hardev Singh astride Virgo. Here he comes. Oh, look at the way he's leaning out of the saddle, going in for the third one, and he's got the kill. 3 out of 3. That was Savar Hardev Singh astride Virgo, a very powerful horse. He's heading back towards the extreme left side. With every element, we feel that it can't get tougher, it can't get more dangerous. But we are going to be proven wrong, ladies and gentlemen. We'll now have a demonstration of cross tent pegging. Savar Hardev Singh getting ready towards your left side. Dafedar Jitendra Singh astride Tamanna getting ready towards the right side. These two riders are going to gallop towards each other, and here they're coming for cross tent pegging. Dafedar Jitendra, Savar Hardev Singh. Perfect synchronization. Veterans of the President's Bodyguard, did this have your approval? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. कितनी शानदार सिंक्रोनाइजेशन थी. तो इसी के साथ ये ट्रिक राइडिंग का प्रदर्शन यही समाप्त होता है. अरे ये कौन बंदा है यार, ये ग्राउंड के बीच में? अरे कितनी बार ब्रीफिंग दे दी, हट जा मुंडे हट जा. Oohs and ahs, that was Risaldar Major, Lakhvinder Singh astride Hunter, and acting Lance Dafedar Sumit Kumar taking a tumble on the ground to entertain you. Ladies and gentlemen, this deserves a big round of applause. केवल आपके मनोरंजन के लिए, आपके चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए इतना जोखिम उठाया, मैदान पे समरसॉट लेते हुए थे एक्टिंग लांस दफेदार सुमित कुमार. Ladies and gentlemen, what a daredevil display by the riders, the best in the Indian Army. Please give them a huge round of applause again. The impressive, statuesque President Bodyguard troopers, astride their caparisoned, sleeky, muscled, powerful, and exquisitely groomed steeds, lend a regal dignity and spectacle of incomparable color and pageantry at all ceremonial parades and occasions. Through the next audio-visual, let us know the significance of horses in the President's Bodyguard. The horse has always been considered a divine animal with a unique combination of kindness and power. Its beauty, intelligence, simplicity, and sensitivity has mesmerized generations ever since it was domesticated around 3500 BC. The horses symbolize power, passion, and free spirit, which humans the world over crave. They are a distinctive amalgam of facets and characteristics that leave us in awe of the fact
that such fine creatures exist. They have been valued and adored in equal measure since time immemorial for their majestic beauty and elegance, as well as their immense strength and energy. Amongst the riders of the regiment, they evoke sentiments of gentleness, affection and empathy for this magnificent noble beast. And every rider who has ever served with the regiment remains indebted to their unflinching loyalty, displayed ever since the raising in 1773. It is to these horses that we all owe our raison d'etre. As the regiment has entered its sesquicentennial year, in honor to the selfless and loyal service rendered by these magnificent beasts, who continue to win adoration of millions of Indians every time they trot with pride. An endeavor has been made to narrate folklore of the horses, to understand the divine animal better. The President's Horses, a collection of such chronicles that sets forth an array of escapades and the beautiful connection between the horses and humans, was released, and the first copy was presented to the then Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind. Devi aur Sajjano, ladies and gentlemen, get ready to witness history, a sight to behold as the pride of the President's bodyguard, the veterans, come in front of you with immense feeling of pride for a march past, riding on their horses. In the 250 years of the inception of the President's bodyguard, this is the first time that a veterans march past is taking place, where the riders are of the ages between 70s to 90. What a sight and what a delightful moment for these veterans, these soldiers who prove that age is just a number. तालियों के साथ veterans का स्वागत कीजिए देवियों और सज्जनों. The contingent is led by Colonel H.S. Sodhi, Vishish Seva Medal, retired, 85 years young, and Arjuna awardee in show jumping. He was also the ex-2IC and ex-commandant of the President's bodyguard. He's astride Rambo. You can see ex-RM and Honorary Lieutenant Fauja Singh. Ye sirf 86 years young hai. He's astride Ranvijay. He is the senior most veteran of the regiment. देवी और सज्जनों, इस उम्र में घुड़सवारी करना कोई आसान उपलब्धि नहीं. अपनी तालियां जारी रखिए. A huge round of applause for their जोश, जज्बा and philosophy of live life king size. In the first column, Risaldar Major and Honorary Captain Lieutenant Milkha Singh, 75 years of age, winner of the gold medal in cross country in Asian Games 1982, along with 84 years old ex-Risaldar Honorary Captain Jai Singh astride Java, and ex-RM Hardev Singh and ex-RM Honorary Captain C.P. Singh. In the second column, RM and Honorary Captain Sajjan Kumar, who has to his credit 195.2 centimeter highest jump in Puzo event 2004. He is astride gold mine along with ex-RM Hawa Singh, ex-RM and Honorary Captain Arjun Singh, ex-Risaldar Chhattar Singh astride vodka. In the third column, 79 years young, ex-RM and Honorary Captain Maluk Singh astride Vikram, and won a gold medal in dressage in Asian Games 1982, along with other veterans, ex-RM Sukhveer Singh, ex-Risaldar Mahinder Singh, ex-Naib Risaldar Dilip Singh. I can't hear your applause, ladies and gentlemen. Please give them a huge round of applause. These veterans are the nation's pride. We thank them immensely for inspiring us, even at this age. We are proud of them. The nation is proud of them. Kudos to these veterans of the President Bodyguard. Post this, we move on to something that will
always stay in your hearts and minds. We call it the musical ride. In a befitting finale to this memorable evening, the President's Bodyguard now presents a musical ride, a visual feast of equestrian rhythm in harmony with martial music. देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट अब आपके सामने एक अनोखा प्रदर्शन करने वाली है। 250 साल के अपने इतिहास में पहली बार ऐसा अनोखा प्रदर्शन करने वाली है ये रेजिमेंट कि रात के अंधेरे में एक अद्भुत म्यूजिकल राइड आपके सामने पेश की जाएगी। द म्यूजिकल राइड इज लेड बाय रिसालदार हरपाल सिंह चौहान astride Voyager. सभी दर्शकों से अनुरोध है कि डंके की ताल के साथ तालियों के साथ अभिवादन करें। ये जो नजारा आपके सामने खिल रहा है, मुझे यकीन है कि जिंदगी भर ये नजारा आपके दिलों में बसा रहेगा। दोस्तों, रिसालदार हरपाल सिंह चौहान म्यूजिकल राइड का नेतृत्व करते हुए The musical ride is now performing static lance movements. The riders have been trained in this drill by Naib Risaldar Shravan Singh. देवियों और सज्जनों, आपसे एक बार फिर विनम्र अनुरोध है, अपने मोबाइल फोन्स के फ्लैश लाइट्स को बंद कर दीजिए। इस ऐतिहासिक समारोह की गरिमा को कायम रखना है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। "16 war horses of the President's Bodyguard now performing a musical ride in front of you, with each section of 4 troopers wearing a different color ceremonial uniform. In pitch darkness before you, all the horses and riders are bejeweled with LED lights, including their standard issue army lances. Do note how after each movement the sections reform on the go. The military band is performing a tune called Keel Row as the horses
move past the center line in a trot in sections of 4 troopers. क्या नजारा है दोस्तों। सैन्य शिक्षा, अनुशासन, अश्वारोहण प्रशिक्षण और संगीत के साथ तालमेल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति अंगरक्षक के बहादुर सुदर्शन जवान और अश्व योद्धा। A diagonal cross being made by each of the sections, the discipline of military training, prompt and pageantry of cavaliers, and the equestrian finesse of caparisoned war horses, all coming together with every single savar and his mount. अब जोड़ी जोड़ी से मैदान के बीचों बीच क्रॉस करते हुए जरा गौर फरमाइए दोस्तों, रात का अंधेरा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन घोड़े ऐसे चल रहे हैं जैसे मानो वो अपने सवार के मन की बात जानते हैं। आपको हमने पहले बताया कि घोड़ों को बेजुबान जीव कहा जाता है। बेजुबान हैं, लेकिन हम उनकी खामोशी को समझ सकते हैं और वो हमारे दिल की धड़कन पहचानते हैं। देखिए अब 4-4 की टोली में मैदान के बीचों बीच क्रॉस करते हुए वहां मैदान पे हरकत ग्राउंड टीम आ चुकी है ब्रश जंप्स को लेकर। जब भी घोड़ों के सामने ऐसे प्रदर्शन में कोई भी नई चुनौती लगाई जाती है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रशिक्षण होता है ताकि सवार और उनका घोड़ा पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना किसी झिझक के सारी हरकतें करें। और अब डंके ने एक नई ताल पकड़ी और ताल के साथ घोड़ों ने भी एक नई चाल पकड़ी। सरपट की चाल में अब आपके सामने आते हुए 16 war horses of the President's Bodyguard in perfect dressing. The military band, led by Bandmaster Subedar Major Soban Singh, is now playing the Spanish Gypsy Dance, a very peppy, exciting tune which is very popular with horses and riders all over the world. And now in line abreast formation with 8 horses each. What a fantastic performance unfolding before us. The horses of the President's Bodyguard have been trained in pitch darkness with all these LED lights also coming into play. And now in troops of 4, each section, beautiful dressing and full on confidence. While the lances are lit
with LEDs. Each lance is carrying the cavalry pennant, showing red over white, blood before surrender, and now they come in pairs. देखिए चलते चलते कैसे घोड़े अब एक सिंगल फाइल में आ गए. Ladies and gentlemen, this formation is called the Indian file. In the olden days, on the battlefields of Europe, cavalry horses used to be charging in a line abreast formation. But in the Indian military tradition, the Indian cavalry soldier attacks one after the other. Imagine the fate of the enemy when he has an Indian file approaching to attack him. Relentless charge, one after the other, war horses coming on to the enemy. And that now they reform. दोस्तों, सारे अश्व योद्धाओं ने इतनी प्रैक्टिस की है, चलिए हम भी कोशिश करते हैं, डंके के साथ ताली बजाते हैं. कितनी बेहतरीन तालमेल है सवार और घोड़े के बीच. पूरा विश्वास है टीम को, सभी सदस्यों को एक दूसरे पर. अब एक दूसरे की तरफ 4-4 के सेक्शंस में देखिए किस तरीके से ब्रश जंप्स को पार किया. और अब 8-8 की कतार में अरे ये क्या हो रहा है, ये तो एक घेरा बना रहे हैं. और देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति अंगरक्षक के सवार और अश्व योद्धा आपके सामने चक्रव्यूह बनाते हुए. सोचिए दोस्तों, पुराण काल में जब दुश्मन के चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह बना तो दुश्मन की क्या हालत होती होगी. दुश्मन बीचों बीच और चारों तरफ खूंखार सवार और अश्व योद्धा. दुश्मन को ऐसा लगता कि मानो साक्षात यमराज उनको ले जाने आए हैं. बचने का कोई रास्ता नहीं.
What a sight, ladies and gentlemen. I don't need to request you for a round of applause. It must come naturally from our hearts. What a sight, what a performance. The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Anup Tiwari, flanked by the second-in-command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav, returning to the parade ground for the final element of today's ceremony. देश का गौरव, सेना की शान, राष्ट्रपति अंगरक्षक का जवान, बोलो मेरे संग एक बुलंद आवाज में, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।